Hello and welcome back to my channel Chakrayatra, and this is your host Harshit Goyal. Well, first of all, I would like to thank each and every one of you for such an amazing response on the teaser of Colors of Rajasthan. Well, I know कि ये episode थोड़ा late आ रहा है and I extremely sorry for that. But trust me guys, in the end, it will be worth it. So this episode is about my city, Jaipur. या फिर आप पिंक सिटी कह लीजिए या गुलाबी नगरी. जितने खूबसूरत इस शहर को नाम दिए गए हैं उतना ही खूबसूरत ये शहर भी है. बट एक्चुअल जयपुर सिटी देखने से पहले हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और इसीलिए इस एपिसोड को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये जयपुर शहर की रचना कहाँ से हुई और क्यों हुई और उसके पहले की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई जाएगी. सो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस शहर का सबसे खूबसूरत महल या किला, आमेर फोर्ट. इस आमेर फोर्ट को बनने में तकरीबन 100 साल लगे, और आमेर सिटी जो कि 4.3 किलोमीटर्स के एरिया में फैली हुई है. वेल, ये सिटी तब की है जब जयपुर बना भी नहीं था. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस आफ्टर एंटरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आमेर फोर्ट इज दिस, द माउटा लेक, एंड राइट इन बिटवीन इज द केसर क्यारी वेयर द सैफरन वॉज ग्रोन. हाउ कूल इज दैट, इजंट इट? एंड यस, लेट मी टेल यू अबाउट द माउटा लेक एज वेल. It was used as the primary source of water for the entire palace. Just have a look. The reason why we are showing Kesar Kyari from this point is because from the entrance you won't be able to witness the beauty of this. And to see more about the palace, let's go inside the palace. This fort is known for its artistic style elements. While proceeding towards the fort, you will also witness large ramparts with cobbled path that will lead you to the main entrance of the fort, a giant gate which is known as Suraj Pol or Sun Gate. While visiting the fort in person, you can literally imagine or you can feel the royalty of this place. And with that said, let's go inside and see what more this fort has to flaunt. Well, as soon as you enter this fort, you will witness a large assembly area, which is right behind me. This is the place where armies would hold victory parades, which were also witnessed by royal families, women folk, through the latest windows. Well, if you are a fan of Bollywood, then you will recognize this particular area because it has been shown in movies like Jodha Akbar, Bajirao Mastani and Mughal Azam, and there are many more as well. Right now, we are at Diwan-e-Aam, or you can say Hall of Public Audience. This place was used by the king to hear the problems from the common people, villagers maybe, and then those problems were addressed by the king.
This is Sukhnivas, where hundreds of years ago, their engineers have managed to design an air conditioning system to control the temperature of the hall so that it remains cool in summers. Well, it has some interesting features too. The doors of Sukhnivas are made of sandalwood and spread the rich aroma in the surroundings. Proper water channels were made to control the flow of water, and the water flows directly into the garden through proper channels. What a cool idea, isn't it? You cannot move further without noticing this magnificent piece of architecture, the Sheesh Mahal or Mirror Palace. It is built with beautiful precious stones and glass and beautiful handmade paintings. The reason why this mahal was made by glass is because in ancient days the queen was not allowed to sleep under the open sky, but she loved to see the stars before falling asleep. Therefore, king ordered his architects to build this kind of a mahal that can solve this problem. And here it is. All the glasses on the ceiling are convex mirrors and are placed in such a manner that if you light up two candles in the corners, their reflection on the ceiling looks like the stars in the whole room. Isn't it cool? Another reason was the king used to shift from Sukh Mahal to Sheesh Mahal in winters as the reflection of the candles keep the room warm. So this was all about Amer Fort, and it ends the phase 1 as well. So let's move to the phase 2, which means a new fort. So after Amer Fort, now it's the time to visit the second fort, which is Jaigarh Fort. But उससे पहले थोड़ी पेट पूजा, फिर काम दूजा. तो इसलिए हम लोग नाहरगढ़ से पहले एक मैगी पॉइंट है, वहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए, और अब हम पीछे जाएंगे जयगढ़ फोर्ट को शूट करने के लिए. और बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, इसलिए एक ऑटो वाले ने हम लोगों को परमिशन दिया कि हम उनके ऑटो में बैठ के शूट कर सकें, which allows me to talk about the people of Jaipur as well. Well, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं. अगर आप लोग एज अ टूरिस्ट भी यहाँ पर कभी आ रहे हैं, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, जस्ट डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर इट. एंड विद दैट सेड, लेट्स गो टू जयगढ़ फोर्ट. एंड कोविड सिचुएशन के चलते लेट्स सी कितनी परमिशन मिलती है और वहाँ पे कितना शूट कर पाते हैं. बट कोशिश पूरी करेंगे कि जितना अच्छा आप लोगों को आमेर फोर्ट लगा होगा, उतना ही अच्छा आपको जयगढ़ फोर्ट भी लगेगा. सो सी यू गाइस एट जयगढ़ फोर्ट नाउ. Well, after Amer Fort, we are here at Jaigarh Fort, which is the phase 2 of the history of Jaipur city. This particular fort was built by, again, Raja Savai Jai Singh जी. कहा जाता है कि ये उनका दूसरा घर था. और मज़े की बात यह है कि जयगढ़ फोर्ट के नीचे से एक सुरंग जाती है जो कि कनेक्ट करती है आमेर फोर्ट को, और इसलिए ही जयगढ़ फोर्ट को आमेर फोर्ट का ही पार्ट समझा जाता है. ये सुरंग बेसिकली इसलिए बनाई थी कि अगर युद्ध और ज़्यादा घमासान हो रहा है और लगता है कि राजा की डिफीट हो जाएगी या राजा की जान को खतरा है, तो उस पैसेज के थ्रू राजा को जयगढ़ फोर्ट के अंदर एंटर कर दिया जाता था. तो आसपास का फोर्ट देखते हैं, और एक बहुत अमेजिंग चीज़ है यहाँ पे जिसको थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ. कम ऑन.
Well, I was talking about this magnificent cannon just behind me. Length is approximately 31 feet और इसका वेट 50 टन के आसपास है. इमेजिन 100 किलो का सिर्फ गन पाउडर यूज़ होता था इसको फायर करने में. कितनी भारी है और कितनी बड़ी है ये आप लोगों को देख के पता लग ही रहा होगा. Just have a look guys, it's just mesmerizing. And the most interesting part about this cannon is this was the world's largest cannon on wheels. ठाट ही अलग थे यार राजा महाराजाओं के, नहीं? Well, these were the few important facts about this particular Jaigarh fort. पूरा बताने लगे तो शायद एक एपिसोड सिर्फ इस फोर्ट में ही निकल जाएगा. तो इस फोर्ट को यहाँ पे सम अप करते हैं. ज़्यादा डिटेल्स के लिए आई विल ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, हॉर्न की आवाज़ से पता चल रहा होगा. बट या, लेट्स सम अप दिस पर्टिकुलर फोर्ट हियर एंड लेट्स मूव टू द स्टेज 3 एंड देन वी विल मूव टू पिंक सिटी. लेट्स गो. Well, we know that this particular vlog is all about Pink City, but we haven't shown you the Pink City yet. For now, why don't you just take a glimpse of the city? Well, जयपुर शहर को करीब से जानने से पहले हम चाह रहे थे कि आप पहले इसकी हिस्ट्री जानें. इसलिए आपको हम लेकर गए आमेर फोर्ट, उसके बाद जयगढ़ फोर्ट और अब बारी है तीसरे फोर्ट यानी नारगढ़ फोर्ट की. Well, Nargarh Fort was built by राजा जय सिंह जी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले आमेर फोर्ट, फिर जयगढ़ फोर्ट और उसके बाद नारगढ़ फोर्ट क्यों आया. वेल, अगर देखा जाए तो नारगढ़ फोर्ट जो है ये अरावली के टॉप मोस्ट पीक पे है, एटलीस्ट इन जयपुर. और ये फोर्ट बनाया गया था जयगढ़ और आमेर को प्रोटेक्ट करने के लिए. स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये जो वॉल है जो साथ में चल रही है, ये वॉल कनेक्ट करती है जयगढ़ फोर्ट को. एंड सिमिलरली जयगढ़ फोर्ट इज इंटरकनेक्टेड विद आमेर फोर्ट. और यहाँ से डिफेंस किस तरीके से किया जाता था? वेल, इस ऊंचाई पे आने के बाद ये जो छोटी विंडोज आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्मी को तैनात किया जाता था. और उन आर्मी का जो सेटअप है, जो भी अटैकिंग सेटअप होता था, वो लोग यहाँ पे लेके बैठते थे. बी इट बो एंड एरो और गन्स. उस टाइम गन्स होती थी या नहीं होती थी मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे बैठाया जाता था जिससे कि उनका विजन एकदम क्लियर रहे. अगर नीचे से कोई दुश्मन आ रहा है तो कोई चूके ना. और क्योंकि यहाँ से लेके आमेर तक ये पूरा फोर्ट कनेक्टेड है, इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे बोला जाता है. सो या, यू कैन टेक अ लुक अराउंड. वेल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में ये है जो मैंने पढ़ा रिसेंटली कि इस फोर्ट पे अभी तक किसी ने भी विक्ट्री हासिल नहीं की है. दैट साउंड स्ट्रेंज बट डोंट कोट मी ऑन दैट. फॉर मोर फैक्ट्स यू कैन डेफिनेटली डू गूगल.
Well, this fort was the last fort which is related to the history of Jaipur. और इसके बाद अब टाइम है जयपुर दर्शन का। लेकिन जयपुर दर्शन से पहले एक छोटी सी लोकेशन और, जहाँ पे एक्चुअली जयपुर शहर की नींव रखी गई। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब रखते हैं अगले एपिसोड के लिए। Until then, keep traveling, keep tripping, because the more you travel, the more you learn.